अस्सलामुअलैकुम। जैसा आप देख सकते हैं इधर मेरे पास बहुत सारे ओरियोज है और इधर मेरे पास ये डब्बे वाले भी है और और ये लंबे वाले भी है। और मैं आपको जैसे आप YouTube पे देख सकते हैं कि ओरियोज़ की रेसिपीज़ बहुत ट्रेंडिंग है, तो मैं इस वीडियो में आपको इन ओरियोज़ से कोई चीज़ें बनाना दिखाऊंगी। और अगर आपको चीज़ें देखनी है आप मेरे वीडियो को देखते रहें। Hey guys, what's up and welcome back to our video. Today I'm going to be telling you some recipes using these Oreos. Over here I have a mini Oreos in box, and I also have these tube Oreos. And as you can see all over YouTube, recipes with Oreos are trending, and so if you want to know the recipes I'm going to be telling you in this video, keep on watching. इधर मेरे पास अपने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और पहले हम बनाएंगे Oreo milkshake. Over here I have all my ingredients, and first we're going to be making an Oreo milkshake. This pack has 20% extra, so I'm going to be excluding some. इस पैकेट जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें 20% एक्स्ट्रा Oreos है, तो मैं थोड़े से निकालूंगी इनमें से. And for this easy milkshake, we're just going to be needing half cup of milk and Oreos. You can change the amount of Oreos you're using according to how strong you want it to be. So जो मैं कर रही हूँ इनमें ओरियोज से, तो आप इसमें सिर्फ आधा कप दूध चाहिए और ओरियोज आपको जितने चाहिए आप उतने यूज़ कर सकते हो, जितना आपको जैसे स्ट्रॉन्ग चाहिए. So first I'm just going to separate the Oreo cream from the biscuit, and that's really simple. All you do is twist it and then use your knife to scrape off the cream. तो अब मैं सिर्फ अपने ओरियो और को बिस्किट और क्रीम से सेपरेट कर रही हूँ. तो इसके लिए आपको सिर्फ ट्विस्ट करना ओरियो को और इसका क्रीम नाइफ से स्क्रैप करना है. तो अब मैं अपने सारे ओरियोज के साथ करूँगी. और हमारा जो एक्स्ट्रा क्रीम बचेंगी हम इसको दूध में डाइल्यूट करके मेल्ट करेंगे. द एक्स्ट्रा क्रीम we're going to dilute in milk and melt it. So now that we're on our final few, okay, I have just this one left. मेरे सिर्फ एक रहता है. And as you can see, the cream and the biscuit are separated. जैसा the cream और biscuit separate हो चुके हैं. Over here, these are the 20% extra Oreos which I have set aside. ये है वो 20% Oreos जो हम साइड में निकाल के रखे हैं, जो हमें नहीं चाहिए इसमें. तो अब मेरे पास एक tablespoon है. I have 1 tablespoon here, and I'm going to put in 2 tablespoons of milk into the cream. मैं 2 tablespoon milk cream में डाल रही हूँ. And I'm gonna put in the Oreos and the milk into my blender here. मैं अपने Oreos और दूध को blender में डालूंगी. और फिर हम इसको बस blend करेंगे. Now we're just gonna blend it. So now we're at the stove and we're going to melt the cream while diluted in milk. अब हम अपने चूल्हे पर हम cream को milk में dilute करके उसको melt करेंगे. अब मैं अपने spatula से इसको mix करूँगी जब तक ये cream fully dilute ना हो जाए. So now I'm just gonna mix this with my spatula until this is fully diluted.
and you want to make sure there are no clumps in the milk and the cream is fully in. आपको ये make sure करना है कि आपके cream का कोई lumps नहीं उसमें रहते और ये पूरा dilute हो जाता है. इधर आप देख सकते हैं ये melt हो चुका है. As you can see, it's melted, and I'm just gonna take it out और मैं इसको बस निकाल रही हूँ. ये अब रूम टेम्परेचर पर कूल डाउन हो गया और हम अपने मिल्क शेक में इसको डालेंगे. This is melted at room temperature now, and we're just going to put this into our milkshake. And we're gonna mix this using our spatula here so that the cream and milk dilution gets incorporated into our milkshake. और मैं अपने milkshake में ये mix करूँगी ताकि हमारा cream और ये mix हो जाए. तो मेरे पास अपने glass में अभी ice और इसमें मैं अपना milkshake डाल रही हूँ. In my glass over here I have ice in which I have put my milkshake into. And there you have it, your Oreo milkshake is ready. ये जैसे आप देख सकते हैं Oreo milkshake तैयार हो गया और ये बहुत अच्छा लग रहा है. अब हम बनाएंगे Oreo mug cake. Now we're gonna make an Oreo mug cake, and again these are only 2 ingredients, Oreo and milk. और इसमें दोबारा सिर्फ 2 ingredients है, Oreo और milk. मेरे पास इधर 1/4 cup milk है और मैं पूरा अपने Oreo का पैकेट डालूंगी. So over here I have 1/4 cup of milk, and I'm going to be putting the whole packet of Oreos into this. So I've just taken the milk up and अभी सिर्फ दूध निकाला है और मैं अपने Oreo को पैकेट को खोलूँगी अब. Now I'm just going to open the packet up. So as this packet has more Oreos than a normal packet because it has 20% extra, I will be telling you how many cookies I'm using exactly. So I'm just opening the packet. क्योंकि इसमें 20% एक्स्ट्रा है, मैं आपको बताऊंगी कि मैं कितने कुकीज़ एग्जैक्टली यूज़ कर रही हूँ. तो इसको साइड में रख रही हूँ. तो हम जैसे हमने मिल्क शेक में किया था, हम मग केक में भी ऐसे करेंगे कि हम इसको सेपरेट करेंगे कुकी और क्रीम को. Like we did in our milkshake, we're going to be separating the cream from the cookies using the same method. Twist the cookie and scrape it with a knife so that the cream comes off smoothly. So मैं अपने कुकीज़ को बस क्राउन कर रही हूँ. जैसे हमने पहले किया था, हम वैसे कुकीज़ को सेपरेट करेंगे, कुकी और क्रीम को. हम उसको ट्विस्ट करके अपने छुरी से उसको स्क्रैप करेंगे ताकि हमारी कुकी और क्रीम सेपरेट हो जाएगी. तो मेरे पास 18 कुकीज़ है. So I have 18 cookies, 18 कुकीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ Oreo की. तब मैं इन सारों को सेपरेट करूँगी. So I'm just gonna separate all of these now. जैसा आप देख सकते हैं हमारा सब कुछ separate हो गया. Like you can see, everything is separated. So I have my milk, the cookies and the cream. तो मेरे पास अपना दूध, cookies और cream है. So now I'm just going to take the milk and the cookies and the cream. And the cookies have been separated into the biscuit and the cream. And what we're gonna do right now is that I have my blender here, and I'm going to put in the cookies into the blender. And I'm going to pour in the 1/4 cup of milk. तो मैं अपने cookies को 1/4 cup of milk में डालूंगी और इनको blend करूंगी अब.
तो जैसे हमने पहले किया था, हम क्रीम को 2 tablespoons of milk में उसको melt करेंगे. Like we did in the milkshake, we're going to dilute the cream into 2 tablespoons of milk. And now I'm just going to put the cream into the milk, and as you can see, the stove is on. So I have my blended Oreo and milk here, and the cream with milk diluted over here. And what I'm gonna do is I'm gonna grab my 1 tablespoon and put in 1 tablespoon of our cream and milk diluted into our Oreo and milk mixture. And then we're gonna pour it into the mug. So I'm just gonna put the Oreo and milk into this. Mug, and I'm going to set that aside. I'm going to grab my 1 tablespoon measuring spoon and put in 1 tablespoon of our cream and milk into the Oreo and milk. And I'm just gonna whisk this. And as you can see, it's starting to get a silkier texture than before, and it looks amazing already. So I have microwaved this for 1 minute, and it looks amazing. And with the leftover cream and milk, I'm going to just drizzle some onto the cake, the mug cake, the Oreo mug cake, and I'm going to just put like 2 Oreos on the sides. And there you have it. Your Oreo mug cake is ready. Looks amazing. Whoa, yummy. So there you have it, your guys. Your Oreo mug cake and your Oreo milkshake are ready. And ये हमारा Oreo mug cake और Oreo milkshake तैयार हो गया और ये बहुत अच्छा लग रहा है. These both look amazing. And now we're just gonna try it. और मैं इसको try करूँगी. First the mug cake. This is the best Oreo mug cake I've ever eaten. ये बहुत मज़ेदार है और आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें ज़रूर. अब ये milkshake. Now the milkshake. This Oreo milkshake is amazing, and the both of these make a great combination. So whenever you make this, make these as a combo. ये दोनों साथ बहुत अच्छे टेस्ट कर रहे हैं और जब भी आप ये बनाए तो आप इसको साथ बनाएं. And if you do try these, tell me in the comments down below and give this video a big thumbs up. Please like, subscribe, and share my videos. Bye!